Hello students, welcome to Surface classes. Let's discuss a problem regarding mensuration. The volume of a cylinder is 48.125 centimeter cube, which is formed by the rolling a rectangular paper sheet along the length of the paper. If the cuboidal box without any lid that is open at the top is made from the same sheet of paper by cutting out the square of side 0.5 centimeter from each of the four corners of the paper sheet, then what is the volume of this box? The volume of cylinder is 48.125 centimeter cube, which is formed by rolling a rectangle paper sheet along the length of the paper. तो एक वॉल्यूम सिलेंडर का एक वॉल्यूम है 40, बना कैसे 48.125 सेंटीमीटर बना कैसे है, एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट को ओवर अलोंग द लेंथ पे रैप किया गया है. If the cuboidal box which is open at the top is made from the shape, cuboidal box जो ओपन हुआ है टॉप से खुला हुआ है, तो कैसा, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, वॉल्यूम कैसे पता लगाएंगे. ठीक है, पहले हम लोग फिगर बना लें. Where R is the base radius of cylinder and L is the length of paper, and L is the length of paper, and H is equal to, where H is the height of the cylinder, and B is the breadth of the paper, and volume of cylinder is pi r square h, pi into to b. Therefore three 385 by 8, so L square B you will get 11 into 11 into 5. तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि B जो L जो है ये 11 के बराबर है और B जो है वो 5 के. सो L इज इक्वल टू 11 एंड B इज इक्वल टू 5. L इज ऑलवेज ग्रेटर देन B. अब हम देख लें कि वॉल्यूम क्या होगा. तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम द बॉक्स होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो होगा वो L इंटू बी इंटू 4 होगा. ठीक है, L इंटू बी इंटू 4, सो 10 इंटू 4 इंटू 0.5 हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका डायग्राम जो फाइनल बनेगा वो ऐसा होगा.
और ये हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।